Assalamu alaikum viewer. I am Advocate Ameer Hamza with you. Dear viewer, in the last lecture we will discuss income tax basis, and now we will discuss registration of income tax. The first step of filing your income tax return is to register yourself with Federal Board Revenue of BR. For income tax registration, individual can register online through IRISL portal. In this way, this type of window open for the registration purpose. Already registered person enter CNIC number, password and login. न्यू रजिस्ट्रेशन के लिए इस तरह का जो है ना परफॉर्मा ओपन हो जाएगा, जिसके अंदर CNIC एंटर करना है। ये मैं जो है एक जो है नॉर्मल CNIC एंटर कर रहा हूँ, वैसे ये चीज़ इसे। उसके बाद ये सिलेक्ट प्रीफिक्स है, इसके अंदर मिस्टर, मिसिस या जो भी है वो लिख दिया। मिस्टर लिख दिया, फर्स्ट नेम लिख दिया, कुछ भी लिख दिया, सेकंड नेम जो भी आपका वो लिख दिया आपने, और कोई लास्ट नेम है तो वो भी लिख दिया। अब करंट सर्विस प्रोवाइडर में ये लिखना आपने यहाँ पर। फॉर एग्जाम्पल मोबलिंग का नंबर है आपका, ये मोबलिंग का नंबर आपके नाम पे रजिस्टर्ड होना चाहिए। ये मोबलिंग का नंबर एंटर कर दिया। यहाँ पे आप सेल नंबर एंटर करेंगे 0092 के साथ, जैसे 0092 का नंबर है 3099630388। ओके, अब ये कंफर्म सेल नंबर यहाँ पे करना है दोबारा, अगेन 00923099630388। ओके, यहाँ पे हमने ईमेल एड्रेस देना है, जैसे हमारा डिवीजन pkcc.shift@gmail.com। okay, same this email repeat pkccsc@gmail.com। ओके, अब यहाँ पे एड्रेस इन्फॉर्मेशन आएंगी, जिसके अंदर आपने सिलेक्ट करना है। जैसे आपकी जो प्रॉपर्टी है वो एग्रीकल्चरल प्रॉपर्टी है, कमर्शियल प्रॉपर्टी है, इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी है, रेजिडेंशियल। फॉर एग्जाम्पल रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी मैंने एंटर कर दिया। यहाँ पे इसकी कैटेगरी क्या है, फॉर एग्जाम्पल ये कोई अपार्टमेंट है, बेंगलोर है, कैबिन है, क्या चीज़ है। मैंने फॉर एग्जाम्पल इसको अपार्टमेंट एंटर कर दिया, अगर ये अपार्टमेंट है। अब ये मेजरमेंट एरिया यहाँ से मांगेगा आपसे कि कितना है। चलो ये स्क्वायर फुट में हमने एंटर कर दिया। अब यहाँ पे एरिया एंटर करना है, फॉर एग्जांपल 500 स्क्वायर फुट है। ओके, यूनिट नंबर होता है, ये कौन से फ्लोर पे, फॉर एग्जांपल 3rd कर दिया। ठीक है, यहाँ पे एड्रेस वगैरह दे दिया, जो भी आपका एड्रेस है वो आप एंटर करें। यहाँ पे एरिया एंटर करें जो भी है। यहाँ सिटी आपको सर्च करना पड़ना, जैसे कराची KRACHI कराची। ओके, इसको हम सर्च करेंगे। ठीक है, ये कराची का एरिया आता है। जैसे चलें कराची हमने लियाकताबाद टाउन सेलेक्ट कर दिया, ये इस तरह करके हो गया।
और ये कैपेसिटी यहाँ पे सिलेक्ट करनी है। आप यहाँ पे बेनामीदार हैं, लीज हैं, टेनेंट है, फ्रेंचाइजी है, ऑक्यूपाई ओनर है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे टेनेंट एंटर कर दिया। इसमें आपका कितना शेयर है यहाँ आपने 100% एंटर करना है। ओके, और यहाँ पे ये कैप्चा एंटर करना है। ठीक है, ये कैप्चा एंटर करेंगे, जैसे ही इस पर सबमिट का बटन दबाएंगे तो आपके पास एक नया परफॉर्मा खुल जाएगा। ठीक है, अभी ये मेरे जो नंबर और ये चीज़ें हैं ये मैंने ऑलरेडी ये रजिस्टर्ड हैं, इसलिए सबमिट का बटन नहीं दबा सकता मैं। ठीक है, अब सबमिट का बटन दबाएंगे तो आगे चले जाएंगे। फ़िलहाल इसको मैं क्लोज़ कर रहा हूँ और वापस अपने रजिस्ट्रेशन ऑफ इनकम टैक्स पोर्टल पे आते हैं। फिर द प्रिंसिपल ऑफिस ऑफ एओपी एंड कंपनी नीड टू विजिट रीजनल टैक्स ऑफिस आरटीओ। सिर्फ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो है वो अवेलेबल है, वो है इंडिविजुअल के लिए। अभी अब हम नेक्स्ट जाते हैं। ये टैक्स पे रजिस्ट्रेशन बेसिस के बारे में बात करता है। सम इम्पॉर्टेंट फैक्टर अबाउट रजिस्ट्रेशन: an individual, a company and an association of a person, AOP or foreign national shall be treated as registered when they are enrolled on this IRIS portal. E-enrollment with FBR provided you with the national tax number, NTN or registration number and password. In case of individual, 13 digits computer and national identity card CNIC will be used as NTN registration number. NTN registration number or AOP company is 7 digit. NTN received after enrollment. These credit allow access to IRS portal to online income tax system, which only was through which online income tax return can be filed. अब हम रिक्वायरमेंट डिस्कस करते हैं। रिक्वायरमेंट डिस्कस कर रहे हैं कि रिक्वायरमेंट क्या है। An individual need to ensure that the following information is available before starting e-enrollment. Requirement of e-enrollment for an individual are as follow. इसके लिए एक CNIC होना चाहिए, सेल फोन होना चाहिए, इस सेल फ़ोन आपके नाम पे रजिस्टर होना चाहिए, एक्टिव ईमेल एड्रेस भी आपकी होनी चाहिए, पाकिस्तानी नेशनैलिटी होनी चाहिए, रेजिडेंशियल एड्रेस होना चाहिए। अकाउंटिंग पीरियड के बारे में बताना, इन केस ऑफ बिजनेस इनकम, बिजनेस नेम और बिजनेस नेम, बिजनेस एड्रेस, प्रिंसिपल बिजनेस एक्टिविटी क्या करते हैं, नेम एंड NTN ऑफ एम्प्लॉयर इन केस ऑफ सैलरी इनकम, एड्रेस ऑफ प्रॉपर्टी इन केस ऑफ प्रॉपर्टी इनकम, अगर कोई प्रॉपर्टी इनकम है उसका एड्रेस देना है। प्रिंसिपल ऑफिसर Principal office of company and AOP need to ensure that the following information is available before starting enrollment. Following particulars are required for registration: name of company, business name, business address, accounting period, business phone number, email address, cell phone number, principal business activity क्या है,
उसके बाद एड्रेस of industrial establishment or principal place business company type like public limited company है private NGO क्या चीज़ है date of registration क्या है incorporation of certificate registration certificate partnership deed in case of firm trust deed in case of trust registration certificate in case of society. These are the requirements. Name of representative with the CNIC NTN. Following particulars of every director and major shareholder having 10% more share in case of company. Partner in case of AOP, namely name, CNIC NTN, passport और उसका शेयर कितना है. उसके बाद रिक्वायरमेंट फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ ए नॉन रेजिडेंट कंपनी having permanent establishment in Pakistan shall furnish the following particular. Requirement for the registration of non-resident company. इसमें name of company, business address, accounting period, phone number, principal business activity address, principal place, registration, name, authority, cell phone, email. These are the requirement of the resident company. अब हम बात करते हैं नॉन रेजिडेंट कंपनी. जो नॉन रेजिडेंट कंपनी है, नॉन रेजिडेंट कंपनी नॉट हैविंग परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट इन पाकिस्तान शैल फर्निश द फॉलोइंग पार्टिकुलर्स. इसमें नेम ऑफ द कंपनी, बिजनेस एड्रेस in the foreign country, name and nationality, accounting period, name, address, accounting letter, authority letter for appointment of authorized representative of the company, cell phone number, email address, principal business, tax registration. These requirement. रजिस्ट्रेशन प्रोसेस की बात करते हैं. रजिस्ट्रेशन प्रोसेस क्या है? ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन रिक्वायर्ड is available only for an individual or person or a individual. Online registration available only for individual and not for association of person or company. Before starting online registration, the taxpayer must have number 1 रीड यूज़र एग्रीमेंट पढ़ना उसने, एक कंप्यूटर स्कैनर एंड इंटरनेट कनेक्शन, ए सेल फोन, ए पर्सनल ईमेल एड्रेस, स्कैन्ड PDF फाइल, सर्टिफिकेट ऑफ मेंटेनेंस ऑफ पर्सनल बैंक अकाउंट, एविडेंस ऑफ टेनेंसी, अगर ऑनरशिप है तो उसके डॉक्यूमेंट, हैविंग बिजनेस, पेड यूटिलिटी बिल, प्रेमिसेस, नॉट ओल्डर 3 मंथ, 3 माह से पुराने नहीं होने चाहिए. ओनली रजिस्ट्रेशन इज़ अवेलेबल टू IRS. अब बात करते हैं रजिस्ट्रेशन एट फैसिलिटेशन सेंटर ऑफ टैक्स हाउस. रजिस्ट्रेशन एट फैसिलिटेशन counter of tax house is available for all. Number 8 individual, association of person and company, income tax and sale tax. For registration of an individual, the individual must take the following document with it: original CNIC, cell phone with SIM registered against his own CNIC, personal email address belonging to him, original certificate of maintenance of personal bank account, original evidence, original paid utility bill for registration of an AOP. Any one of the member partner must
For registration of an AOP, anyone of the member partner must personally go to any facilitation counter of any tax house, take the following document with him. Original partnership deed चाहिए in case of firm. Original registration certificate from the registered firm in case of a firm. ओरिजिनल पार्टनरशिप डीड जो बनाई होगी वो, और फिर ओरिजिनल रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट फ्रॉम रजिस्ट्रार ऑफ फर्म. CNIC of all member partner, original letter on letterhead of the AOP signed by all members partner, authorizing any one of the members partner, income sale tax registration, cell phone with SIM registered against his own CNIC but not already registered with the FBR, email address belonging to AOP, original certificate of maintenance of bank account AOP, original evidence of tenancy agreement, ownership of business premises if having a business, original paid utility bill of business person not less than 3 months if having business. These are the requirement. For registration of a company, the principal officer must personally go to any facilitation counter of any tax house, take the following document. इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट ऑफ ए कंपनी. इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट ऑफ कंपनी एक होता है जिससे कंपनी अपने काम का आगाज़ कर सकती है. CNIC ऑल डायरेक्टर, ओरिजिनल लेटर ऑन letterhead of the company signed by the all director, verifying the principal office and authorize him on income tax, sale tax registration, cell phone with the SIM registration against his own CNIC but not already registered with the FBR, email address belonging to the company, original certificate of maintenance of bank account company, original evidence of tenancy ownership of business premises, original paid utility bill of business premises not older 3 months if having business. अब बात करते हैं मॉडिफिकेशन ऑफ इनकम टैक्स रजिस्ट्रेशन. Income tax registration of a person can be modified after discovering any change or omission in any information, particular date or document of association with the registered of the person. Person would to file a modification form of registration in IRIS, change the relevant particulars. The commissioner will grant or refuse the request modification of the person after examining the modification from the registration and making any inquiry deemed necessary. Person can within 30 days of the decision regarding modification file a representative before the chief commissioner. Chief Commissioner will decide on the merit of the personal detail. मॉडिफिकेशन के बाद हम आ गया कैंसलेशन ऑफ इनकम टैक्स रजिस्ट्रेशन. Commissioner may by order in writing cancel the income tax registration of a taxpayer after asserting that there is no outstanding liability against the taxpayer and all the relevant information, particular data, document association with the registration of the taxpayer. Warrant such cancellation. In the last we will discuss
change in particular of registration. In case there is a change in the name, address, or other particular as stated in the registered certificate, the registered person shall notify the change in the prescribed form the RTO with 14 days of such change. The change in the business category shall be allowed after RTO has verified the manufacturing facility and confirmed the status as industry concern of the electricity and gas distribution company. Now it's end of the chapter. Please subscribe. Subscribe. Please subscribe to the channel for the motivation. Inshallah, we will prepare next video. When you watch to the whole video and given some response, no it's end. Again request, please share and subscribe to that channel and like to that video.